Hi everyone. This is short session about stability of slope. Mainly we are going to discuss stability of infinite slope. There are two kinds of slope, infinite and finite. Okay. तो रिसेंटली इस पर जो है ना गेट 21 में इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो मॉक 10 है कल का उसमें हम इससे क्वेश्चन पुट किया है, तो बेटर है कि इसके थियरी भी आपको प्रोवाइड कर दूं। शॉर्ट सेशन है, ट्राई करूंगा कि जो है ना 15-20 मिनट में फिनिश हो जाए। So dear students, we have two types of slope. So this is slope, and friends, this is so another type. This is also slope. Okay, this is also slope, but it is limited, and relatively, this slope extends to longer distance. So this is a kind of infinite slope, and this is kind of finite slope. Finite slope, and this is a kind of infinite slope. So both have different failure behavior. This is something difficult and not important for GET examination. And we are going to discuss stability of infinite slope. Stability of infinite slope. This is very easy to discuss. Okay, this kind of slope. So friends, this is diagram for analysis purpose. X represents an infinite slope which is inclined to horizontal at an angle of beta. So this is angle of inclination with horizontal. Okay, this is horizontal line. So this slope xx is inclined with the horizontal at an angle beta. And now we are considering a plane yy at depth z below this slope surface at depth z, and we are assuming soil properties and overburden pressure all are constant at any depth below this slope surface. Okay, so here failure will take place along this plane if this depth is of sufficient value. In case of infinite slope, this is a plane along which shear failure takes place, and we are going to stop this failure. That is, we are going to stabilize this slope. So actually we are deriving the condition for a stable slope that is not failing like this. This soil mass will slide down along this plane. So here we have schematic diagram for infinite slope. So we have taken a failure surface at particular depth. This is yy. Now friends, try to find vertical stress acting on this plane, on this failure plane, vertical stress.
So for this purpose, we try to find the weight acting on this plane, weight upon area, that is vertical stress. For this purpose, we consider a prism of width b and thickness of unity. Width is b and thickness is unity. It's fine now. This is a prism. Now guys, we can easily find the volume of this prism. Volume. This area into 1. This area into 1 is the volume. Area calculation is very easy. Sum of parallel sides into perpendicular distance between these two parallel sides. This angle is beta. Okay, because this is normal to both parallel lines. So this is 90 degree, and due to slope of this bed, this vertical line will make angle beta. That is the angle of slope. So this becomes z into cos beta. Vertical distance between these two parallel sides. Okay, sum of parallel side, b plus b by 2 into vertical distance into 1. So this is simply 2b upon 2, that is b z cos beta. This is weight of this prism. We know unit weight is weight upon volume. So this is volume. Okay, this is volume of this prism. Okay, now we can easily find the weight of this prism. Weight is unit weight into volume. So volume of this prism is bz cos of beta. So this is weight of this prism, and this prism is kept over this area. So divide this weight by area of base of this prism. This is b into 1. B into 1. Okay. So guys, we can easily find the vertical stress sigma z, weight of this prism upon area on which it is kept. So this is b into 1. B into 1. Okay, b we will cancel each other and we'll get sigma z is equal to gamma z cos of beta. Guys, this is vertical stress acting at any point which lies at depth z below the ground surface or slope surface. Okay, तो यहां से आपका ये sigma z calculate होगा. This is sigma z. Okay, it is acting. This is sigma z, vertical stress. Now it has two component. This vertical stress has two component. One normal to this surface, and we are assuming this is failure surface. This soil mass is sliding down along this plane. Okay, so it has two component, one normal to this failure plane and other along this failure plane. So friends, this is sigma n and it is sigma z cos of beta, and shear stress, it has another rectangular component and it is acting in the plane. The stress which is acting in the plane is called shear stress, and the stress which is acting perpendicular to the plane is called normal stress. So normal stress on failure surface is this,
and the stress which is parallel to failure surface, that is called shear stress, and it is sigma z sine of beta. Okay, and sigma z is gamma z cos beta. Okay, this is unit weight of the soil. So friends, we have calculated normal stress acting on this failure plane and shear stress acting in this failure plane. Done. Suppose if this depth is sufficient, we have taken this plane where soil mass is sliding. Definitely this sliding is taking place due to this shear stress induced due to the weight of soil above this plane. ये जो स्लाइडिंग हो रही है सॉइल की, इसी की वजह से हो रही है ना, यही इसको सीआर कर दिया. इट मींस फॉर फेलियर induced shear stress greater than shear strength of this soil. Shear strength, that is tau f. This is shear strength and this is induced shear stress. If induced shear stress is greater than shear strength of the soil, in that case we'll see soil is not stable. It is failing. It is sliding down along this plane. Induced shear stress. And the value of induced shear stress is sigma z sine beta. If it is greater than shear strength of the soil, then this is not a case of stable slope. ये स्लोप जो ना ब्रेक कर जाएगा, सरक जाएगा ये नीचे. ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर हो गया. सो फॉर सेफ और स्टेबल स्लोप, for stable slope, induced shear stress must be less than equal to maximum shear stress or shear strength. Dear students, we generally keep the value of induced shear stress less than tau f by providing some factor of safety. Okay, now it becomes, यानी कि induced जो है ना कम होना चाहिए इससे. So this is factor of safety greater than 1. सपोज कर लो कि ये सॉइल हमारा फेल कर रहा है 20 किलो पास्कल, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया. दिस इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. इफ इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन 20 किलो पास्कल, दिस इज अनस्टेबल काइंड ऑफ स्लोप. ओके, अगर मैं बात करूं कि हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसमें इंड्यूस करना कितना है, टाउ एफ अपॉन 1.2. तो आपका क्या है, आप सेफ है और आपके पास सेफ्टी रिजर्व है. आप इसमें इंड्यूस्ड इससे ज्यादा नहीं होने देने जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव कंसिडर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. यानी कि इससे ज्यादा मैं इसमें इंड्यूस नहीं होने दूंगा. ओके, वी विल कंस्ट्रक्ट दिस स्लोप विथ दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी. कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना है कि हमें एकदम यहीं तक रीच नहीं कर देना. ऐसा डिजाइन हमारा स्लोप का नहीं हो कि जो इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस है वो उस शियर स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए. सपोज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज 20 किलो पास्कल and we try to keep the value of induced shear stress less than 20 kilo pascal. So we have provided factor of safety. यानी इससे ज्यादा वैल्यू हम नहीं जाएंगे. हमारे पास सेफ्टी भी रिजर्व है. कितना आ जाएगा, 20/1.2. तो इससे ज्यादा हम वैल्यू नहीं इंड्यूस होने देंगे इस प्लेन में. तो हमारे पास सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जो है ना स्टेबल कंडीशन मिल जाएगा. क्लियर? नाउ डियर फ्रेंड्स, we consider case number 1. We are going to calculate factor of safety for
cohesionless soil. Okay, so factor of safety is shear strength of the soil upon induced shear stress. Dear students, from more Coulomb failure criteria, we have expression for shear strength of the soil. Cohesion plus normal stress tan of internal friction angle. But remember, we will use effective normal stress. This is effective normal stress. Effective soil strength parameter and effective normal stress. Okay. But in case of dry soil, effective normal stress, effective stress and total stress both are same. तो ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस ही यहाँ पर पुट किया जाएगा. डन, ये माइंड में आप रखिएगा, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं. C plus sigma and tan phi. This is shear strength of the soil. This is shear strength of the soil. Friends, in first case we are considering cohesionless soil. It means C is 0. So shear strength of the soil is sigma n tan phi. Factor of safety is tau f upon tau. Okay. So factor of safety tau f upon tau, and tau f is sigma n tan phi, and tau is sigma z sin beta. है ना? Yes. The component of vertical stress along the plane is called tau, and it is causing sliding of the soil mass along this plane. और हम इसे रोकने का प्रयत्न करने जा रहे हैं. Okay, so this tau is sigma z sin beta. Sigma z sin beta. Done. Sigma n is sigma z cos beta also. Sigma n sigma z cos beta. sigma z कैंसिल हुआ, cos beta डिनोमिनेटर में आएगा, then it becomes tan phi upon tan beta. So factor of safety for infinite slope, factor of safety for the stability of infinite slope is tan phi upon tan beta, where phi is angle of friction and beta is slope angle. slope की एंगल है. ठीक है, ये स्लोप आपने कितना दिया है. ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां से हमारा कैलकुलेट होके आ गया. डन. दिस इज प्रॉब्लम in our GATE examination 2021 1 mark. Cohesionless soil is naturally deposited and makes a slope of infinite extent having slope angle of 25 degree. Slope angle, that is beta is 25 degree. Beta is 25 degree. If the effective angle of internal friction of the soil is effective, बोल रहे ना, हमने बोला था ना, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव ये भी रखना है, इफेक्टिव ही रखना है, बिकॉज पोर वाटर प्रेशर इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. While calculating shear strength of the soil, we are not considering pore water pressure. Okay, because pore water pressure के corresponding अगर आप मोर सर्कल ड्रॉ करेगा तो वो पॉइंट आता है, पॉइंट शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है. ओके, सो बीटा स्लोप एंगल 25 डिग्री, phi 30 degree. Question is asking to find factor of safety. It's very simple problem of 1 mark. Tan phi upon tan beta. Okay, answer is 1.2381. Okay, get answer 1.22 to 1.25. Second case. In this case, guys, if you take, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या हो रहा है, tan phi upon tan beta. Okay, tan phi upon tan beta. If you take factor of safety equal to 1, in that case we'll see theta is equal to beta. Okay, sorry, phi is equal to beta.
फाई आपका बीटा के बराबर हो जाएगा। अगर थोड़ा भी जो है ना, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ी इस फाई से तो फेल हो जाएगा वो। दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन। तो इसका मतलब यहां पर हो गया, सपोज दिस इज स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, angle of slope, and if it is equal to phi, अगर इसमें थोड़ा भी स्लोप आपने इंक्रीज कर दिया, ओके, स्लोप जैसे ही बढ़ा दिया ये, सो ये बीटा आपको फाई से बड़ा हो जाएगा और फिर आपका जो है ना यहां पर स्लाइडिंग होगी, फेलियर होगी सॉइल की। सो दिस इज नॉट केस ऑफ स्टेबल स्लोप। सो फॉर स्टेबल स्लोप, स्टेबल इनफाइनाइट स्लोप, क्या करेंगे आप, जो बीटा है, एंगल ऑफ स्लोप है, वो लेस देन इक्वल टू फाई होगा। जितना कम रखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, अगर इक्वल रखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगा। यानी कि आप एक्सट्रीम पर है, थोड़ा भी बढ़ा कि ब्रेक हो जाएगा। आपने कोई भी सेफ्टी रिजर्व नहीं रखा है, थोड़ा भी एंगल बढ़ेगा तो वो ब्रेक कर जाएगा। केस 2, फॉर सी एंड फाई सॉइल्स, हियर इन दिस केस सॉइल इज नॉट कोहेशनलेस, so cohesive strength is also participating in shear strength of the soil. सॉइल सीयर्ड ना हो, इसमें कोहेसिव स्ट्रेंथ भी रोल प्ले कर रहा है। ओके, जैसे ही ये आता है सीयर स्ट्रेंथ में एडिशन हो जाती है। shear strength of the soil C plus sigma n tan phi. Okay, C plus sigma n tan phi. Now we try to calculate factor of safety in this second case where soil is cohesive. Tau f upon tau. This is maximum shear stress induced without causing failure or shear strength of the soil, and this is actually induced shear stress. तो हमें ये कैलकुलेट करना है। This is obtained by this equation C plus sigma n tan phi, and shear stress acting along the plane is due to weight of the soil above plane, और वो कितना है हमने निकाला था, सिग्मा z sin बीटा। डन, जस्ट वी आर अरेंजिंग C plus sigma n is sigma z cos beta tan phi sigma z sin beta. Okay, C plus sigma z is gamma z cos beta, gamma z cos beta into cos beta, gamma z cos square beta tan phi upon this. Okay, so this is factor of safety if we consider cohesive strength of the soil also. Now dear students, let HC be the critical height of the slope for which degree of freedom for which factor of safety becomes 1. फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे ही 1 बनेगा, टाउ एफ एंड टाउ दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एकदम लिमिटिंग कंडीशन पर पहुंच चुके हैं। इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन अ प्लेन एट एनी डेप्थ is just equal to shear strength of the soil. So this is a limiting condition of the failure. इससे ज्यादा हुआ soil फेल कर जाएगा। Clear? So here we are not taking higher factor of safety. यहाँ पर factor of safety 1 है, यानी कि failure आपकी यहाँ पर होती है, जहां पर होती है हम उतना तक इंड्यूस करा रहे हैं। तो वो हाइट क्या होगा? That height is called critical height, height of the slope, critical height of the slope. फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 1 किया। इफ वी पुट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ यूनिटी, इन दैट केस वी विल गेट दिस कंडीशन, एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द हाइट ऑफ स्लोप। ओके, सो दैट हाइट ऑफ द स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय HC, क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप फॉर विच फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम्स 1। यानी कि हम क्रिटिकल कंडीशन पर, अपने पास कोई सेफ्टी रिजर्व नहीं है, तो आपका जो ना वो हाइट क्या होगा, जहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाता है, और जहां पर जो ना इन अदर वर्ड्स टाउ इंड्यूस्ड स्ट्रेस स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाता है। यानी कि थोड़ा सा भी बड़ा इंड्यूस्ड, तो अब
सॉइल जो है ना उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो फेल कर जाएगा उस प्लेन के अलोंग, जिस प्लेन का डेप्थ जो है ना HC है। सो डियर स्टूडेंट्स, F is equal to this and we make it as unity, rearrange, further rearrange, and finally we will get this relation. Here C upon gamma HC is called stability number. This is dimensionless number. Remember this number. This is important. Stability number. And this is a dimensionless quantity. C upon gamma HC. Remember this. This is dimensionless number and it is called stability number. C upon gamma SC. This is cohesion of the soil, unit weight, and this is critical depth. Critical depth. Okay. Critical depth. Now, friends, if we provide factor of safety to cohesion, this is cohesive strength. If we provide factor of safety to cohesion, it means the factor of safety with respect to cohesion. So cohesion को factor of safety देने जा रहे हैं, cohesive strength को. So this is written like this. This is actual cohesive strength of the soil, and we are considering cohesive strength is less than actual. So it means we are providing factor of safety to cohesive strength. Actual cohesive strength is C, but we are assuming this is cohesive strength. This is called mobilized cohesion. Okay, and we are treating cohesive strength of the soil is less than actual. It means we are considering soil is having less cohesive strength. It is adding less strength to soil against shear failure. ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, जबकि है सी दिया ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सॉइल फेल करता है टाउ वेब पर, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाना, टाउ से ज्यादा नहीं जाना, एंड दिस टाउ इज लेस देन दिस. इट मींस वी आर कीपिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द डिजाइन ऑफ स्लोप. हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे. होता है ना कि भाई जो है कि इतनी, सपोज कि ये आपका जो है ना कोई स्टोरेज है, इतनी पानी आती है तो ये स्टोरेज टूट जाती है, इसके वॉल ब्रेक कर जाते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. तो हम कहेंगे इतना हम क्यों जाएंगे, इतना पर टूटती है, तो हम कहेंगे कि हम इससे ज्यादा इसमें पानी नहीं होने देंगे, तो यहां पर कोई अरेंजमेंट बना देंगे कि पानी निकल जाए. तो इसका मतलब वी आर एडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू दिस स्टोरेज. इसके साथ हमने तो इसकी मतलब फेल होने की जो है ना जो डर है वो बहुत कम हो चुका है. तो वही सेंस में कि हम यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसको देने जा रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू cohesive strength of the soil. We are taking less value of cohesive strength. This is mobilized cohesive cohesion. एक्चुअल में ये है. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने इसी में दे दिया, हम लेस इसको कंसीडर कर रहे हैं. तो अगर लेस कंसीडर करेंगे तो आइए फिर बात करते हैं. यहां से जो है ना हमारा ये जो टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर है वो क्या बन जाएगा, अभी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग ये CM अपॉन गामा, एंड करस्पॉन्डिंग टू, अब लेस कंसीडर कर रहे हैं तो डेप्थ भी कम होगी, CM अपॉन गामा H. ओके, वैल्यू सेम वही है, स्टेबिलिटी नंबर चेंज नहीं होगा उस स्लोप का, ये दोनों सेम है. यहां से जो आपने निकाला है ये वाला और ये वाला, बोथ आर सेम. सो C अपॉन गामा HC is equal to CM upon gamma H. Okay, and CM is
CM is C upon FC. C upon FC, CM, gamma H. Okay, C cancel हो जाएगा, gamma will cancel each other, and we will find HC is equal to FC into H, FC HC upon H. So we have FC C upon CM and another same FC upon H. इसको भी हम बोल सकते हैं दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू height of the slope FH. So FC and FH both are same. FC and FH both are same. ये दोनों सेम होगा, चाहे आप कोहेसिव स्ट्रेंथ पर जो है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करो या जो है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप स्लोप के हाइट पर लगाओ, दोनों जो है ना सेम रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट यहां से आपको शो हो रहा है। हेंस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन इज द सेम एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। सो FC इज इक्वल टू FH। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ डिस्कशन। ओके, तो अपना जो है ना इनफाइनाइट स्लोप की अगर प्रॉब्लम आ गया तो दो ही प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, टू डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आपके क्रिएट होंगे। If factor of safety is equal to tan phi upon tan beta, okay, and सेकेंड जो प्रॉब्लम निकल के आएगा, सेकेंड प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये जो आपका टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर है Sn इज इक्वल टू C अपॉन FC gamma H. If stability number is given in the problem, C is given in the problem, factor of safety is given in the problem, unit weight is given in the problem, then guys we can easily find height of slope. Question पूछेगा stability number of slope is given, cohesive strength of the slope is given, इसकी यूनिट जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो पास्कल में होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, गामा इज गिवन इन द प्रॉब्लम, देन गाइज वी कैन इजीली फाइंड हाइट ऑफ स्लोप। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा इनफाइनाइट स्लोप के लिए। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप के लिए दो ही टाइप के बनेंगे। जो इसका सेकंड जो टाइप है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट स्लोप, उसको छोड़िए, उसके लिए टाइम बेकार में खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। इस पर टेस्ट में आपका क्वेश्चन बेस्ड है, तो आप इसको देख लीजिए। दो फॉर्मूला आपको यहां से निकल के आया, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं यहीं पर सेशन।